today's Arsenal versus West Ham game was not for the faint-hearted. 82 minutes of just waiting for that one goal. This was not an easy game. I mean, I was expecting a difficult game, and मुझे लग ही रहा था कल मैं आदि से भी बात कर रहा था. I was telling him that ये game draw होने वाला है, and I almost gave up till when it was like 70th, 72nd minute. में I was like, ठीक है अभी नहीं हो रहा because West Ham started to play well, and suddenly out of nowhere we get a goal. Satish, talk me through your emotions. कैसा था तेरा night last 2 hours? ओ माय गॉड भाई मतलब आर्सेनल को अगर किसी का लो बीपी पेशेंट को अगर हाई बीपी कराना है तो भाई आर्सेनल का फैन बन जाए. दैट इज वन थिंग व्हिच आई वुड प्रोबेबली से. मतलब क्या था मैच. मतलब ridiculous right from day one. From when the match started, first half Arsenal domination. You would have expected them to score 3 goals, 4 goals, but they did not score any goal. राइट. तो उनको तो भाई मतलब पूरा लास्ट मिनट तक फैंस को दबाना था. बट I will obviously go through what match, what happened in the match. But boss, मतलब after 82nd minute they scored a goal. Oh my god, मतलब वो भी things change. We'll discuss that, but things change. But then climax तो अभी तक बाकी है. पिक्चर है मेरे दोस्त जो भी है. Shit, मतलब क्या चल रहा था. अगर वो VAR पहली बार आर्सेनल के मतलब फेवर में आया. पहली बार. VAR की जय हो. आज VAR की जय हो. वार ने हमको वॉर से बचा दिया सीरियसली. मतलब अगर आज हुआ होता मैच. Oh my god, in the background we can see that this is a very well made goal. नहीं वो फलन का गेम वो पुराना लास्ट मैं वीक का गेम का हाइलाइट्स दिखा रहे टोसार हैं. आई का डोंट गोल नो. देखा. बोला कि उसका लास्ट गोल तो भाई अभी गोल मारा है उसने. इन दिस ईयर इट वाज आई थिंक हिज फर्स्ट गोल राइट. सो he had finally Finally he scored. हाँ, finally he scored. Yeah, but oh my god, it was. I can't believe the match. I saw. Just to say once. So I was actually after the disappointing first half. I just went out, went for a walk, had something to munch, and then came back. I was outside a Jain Mandir when this penalty decision, not penalty, when the goal was given and then VAR was called upon. I was just outside the temple. भाई भगवान सब बुरी आदत छोड़ दूंगा. सब कुछ छोड़ दूंगा. VAR का सतीश कौन सा बुरा आदत है तेरे में जो छोड़ने वाला है? जो भी हो VAR जो भी होएगा. पर VAR को ये ओवरटर्न करा दो. वहां से लेके हनुमान मंदिर के बाहर तक चल के फाइनली उधर ओवरटर्न हुआ. तो मतलब क्या मतलब ऐसा दिन आ गया कि हमको भगवान का भी हेल्प लेना पड़ रहा है VAR को हमको ये करने के लिए. मतलब सीरियसली. तूने एक चीज नोटिस नहीं किया? दोस प्लेयर्स जिसको हम गाली देते हैं, काय हैवर्ट्स, ओडेगार्ड, ट्रोसार्ड, they came up clutch. I mean, पूरा 70 minutes तक all our AJs, Gyökeres, Zubimendi, who we signed, who we thought that will be, I mean, no doubt अभी तक अच्छा खेले, but totally useless. Second half में तो we were not creating at all, and Odegaard and Kai Havertz picked up the momentum, came up clutch when we needed. Like 78, 79th minute से suddenly Kai Havertz started creating. उसके पहले भी he created a very good chance. Odegaard also almost created a good chance. And third time when Odegaard went, I was like looking at him, shoot, shoot, shoot. वो रुका Shoot रुका तो नहीं रुका. किया, Trossard को pass दिया and Trossard did the rest. I will go back to our first half. Okay, तूने बहुत important चीज बोला. We started very well. First 20-25 minutes dominating. We created chances. पहले 10 मिनट में we had 6 shots on target. I mean, goal मारना चाहिए था. And then again we had few chances. Ben White gets injured. What's the point of bringing in Zubimendi? मतलब what was Arteta. मतलब you can't have a manager getting what a defensive midfielder in place of right back. मतलब क्या सोच रहा था. I have no idea what he was trying to do. I think Arteta, to be very honest, is now showing his vulnerability as a manager. I'd say you lose matches, you do that, but what? मतलब
So can anyone explain what was the logic behind him getting Zubimendi? I'm not I able to think understand. I think he overthought. वो moment में he overthought. He had too many options in his mind, and he वही है कि जब But how? it's like at that clutch moment ये करूँ वो करूँ अरे ये हो सकता है वो हो सकता है. He was afraid that Somerville, he was playing very well. Somerville will be able to beat Mosquera very easily, and that's why उसको लगा कि Declan Rice को right back में वो खिलाता है. Equally bad decision. Declan Rice, Very the bad best decision. player on the pitch, उधर से हटा के तूने राइट बैक में डाला एंड यू ब्रिंग इन हु जुबी मेंडी और लुइस माइल्स स्केली. खत्म हो गया था हमारा गेम. खत्म था. If you see the momentum also after the 25th minute, I think Arsenal's graph just went down, right? I think even when the second half started, we were very down. मतलब, so that's what I was watching. I first half, तो I told you, right? 25 minutes के बाद ये हुआ. But as a manager, right, you are not having a backup that Zubimendi comes in. Zubimendi has been out of form for some time. Like, let's be very clear. He's saying that rest दिया है, but मुझे लगता है वो out of form रहा है. I think if बोनेमोर के साथ जो मैच हुई थी, उस I think second goal उसकी वजह से गया वो. He just slept off, during that match. And getting him right now in the firing line was a very bad decision. And as I said, this shows Arteta's frailties as a manager. I think this probably Pep would have not done that, right? Pep, you have so many backups, you don't do these kind of mistakes. And then he kind of recorrected, right? At the end, Zubimendi को वापस substitute कर दिया. क्या He करना? couldn't correct it. He couldn't correct it afterwards. वो इतना tricky situation था कि अभी if you have to correct it, you have to bring out Zubimendi. बिकॉज लुइस माइल्स के लिए क्या खेल रहा था. ही वाज टर्निंग तीन चार बार बॉल लेके ही वाज ड्राइविंग थ्रू देयर मिडफील्ड. Declan Rice was intercepting every chance which West Ham were trying to create. अभी उसको अगर वापस वो मिडफील्ड लाना है तो he has to bring out Zubimendi again. वो नहीं किया. सेकंड हाफ में he tried to correct and Calafiori भी निकाला. Calafiori was playing well. He was not bad at all. He was He playing was well, not but he bad at had to all. remove Calafiori just to make up for his mistake. And उसके बाद जुबिमेंडी को उससे निकाला वापस. वही बोल रहा हूँ यार. मतलब जुबिमेंदी को, मतलब ऐसा कौन मिस्टेक करता है यार एज एट दिस लेवल. You that means he is not confident. मतलब मस्केरा को अगर तुम सी अगर लेट्स बी वेरी क्लियर, राइट, कोई डिफेंस में रहता है, वो बंदा डिफेंस को ही रखता है ना. तुम कोई ऐसे चेंज नहीं करते हो इन सच अ क्रिटिकल मैच. एंड Arteta's strategy got exposed, and this is a problem with him. He has to learn as a manager. If you are getting paid so much, you have to back up your decision. ठीक है, चलो तुमने ले लिया इसको, तो उसको बैकअप करना फिर decision. How can you नहीं नहीं just रीसब कर नहीं. लो? I mean, I was happy that he acknowledged his mistake Of and he course, removed Zubimendi. that, And उसके I, पहले जैसे ही फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, he brought in Masquera. That's a sign that he's a गुड मैनेजर. दैट ठीक है. उसको मिस्टेक समझ में आया, देर से समझ में आया लेकिन समझ में आया. बट ही ऑलमोस्ट बॉटल्ड इट. वो सिचुएशन में वो प्रेशर में. एंड जस्ट बिफोर दैट डिसीजन Arteta, Gabriel Heinze, and I don't know the another assistant's name. ये Andre Berta, Andre Berta. तीनों were discussing. I mean, इतना डिस्कशन है. बस मेरे को लाना है. That's it. I mean, there needs to be some kind of a good explanation why he didn't bring Masquera. But okay, ठीक है, वो भी छोड़ो. Last point for this video. 94th मिनट में जब गोल गया, तेरे दिमाग में क्या चल रहा मेरे मुंह से दो गाली निकली. BCMC आर्सेनल. था? गालियां मंदिर के गालियां बाहर. गालियां. पर मंदिर के बाहर. मैं मंदिर वो के भी बाहर जैन था, मंदिर के बाहर. मैं कंट्रोल कर दिया अपने आप को कि वहां पे गाली नहीं दे सकता, तो मैं चुप हुआ. फिर बाद में मुझे लगा चल कुछ तो VAR का हो सकता है, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि उसको ब्लॉक किया गया. तो भगवान ने मेरी सुन ली पहली बार. तो माफ किया गया भगवान ने. माफ समझा. किया होगा, मतलब डेफिनेटली. वो मंदिर के वही बोल रहा, सब अभी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, तुझे सामने वचन दे दिया अभी. वो मंदिर और जैन मंदिर के बाहर, दोनों जैन मंदिर और हनुमान मंदिर, दोनों को
ऐसे प्रे करके बोला भाई अब बस हो गया, बिकॉज भगवान ने देख लिया भाई ये हार्ट अटैक वाली सीन आ जाएगी, नहीं तो ऐसे ही जिस तरह से आर्सेनल खेल रहा है। मतलब भाई जो मैच को जो उनको क्लोज करना चाहिए उस मैच को भी क्लोज नहीं कर पाते। क्या बोलेगा, मतलब यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विद देम, व्हाट इज रॉन्ग। मतलब मेरे को 94 जब वो गोल दिया, आई वॉज डन ब्रो, आई वॉज डन। मेरे को मेरे सामने दिख रहा था पेप ग्वार्डियोला लिफ्टिंग द प्रीमियर लीग टाइटल अगेन, प्रीमियर लीग। एंड मेरे को आई 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 told myself that I don't have that guts, that power again, that strength again to start this August and go till the next month, next year, May, waiting for another championship season to end and see us as a Premier League champion. मेरे में वो स्ट्रेंथ नहीं है, बट स्टिल अभी 2 गेम और बाकी है। एंड आई वाज लाइक सो मेनी थॉट, प्लीज बोर्नमouth ड्रॉ निकाल लो सिटी के साथ। एंड आई, फॉर मी, लास्ट 8 months, all the emotions which I felt, it was like done, पूरा वेस्ट गया, all पूरा the वेस्ट गया, highs, all the downs. But पूरा वेस्ट। still, we should not get ahead of ourselves. Yes, this was a big result. Three नो back-to-back wins after the City loss. Two very winnable game, Burnley and Crystal Palace. If we win against Burnley, and I mean, of course, mathematically, yes, these are winnable games. You cannot drop points in these games, according to me. Yeah, we said the same thing about West Ham also, and how No, Arsenal West played Ham that. तो we didn't do the preview, but I had a feeling कि draw होगा। आदि से पूछ लेना, मैंने उसको बोला था draw हो सकता है। देखो एंड यार, आदि ने बोला साथ में मैच देखते हैं, जस्ट बिकॉज मुझे लगा, मुझे डर था कि ड्रॉ होगा, तो मैंने उसको मना कर दिया। सी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुझे बता रहा हूँ। एक टॉप टीम है, नंबर 1 और नंबर 18 टीम का देखते हैं, राइट? आई अंडरस्टैंड प्रीमियर लीग इज कॉम्पिटिटर, बट अ चैंपियन टीम हैज टू डिफीट देम यार। मतलब नाउ दैट इज द प्रॉब्लम विद आर्सेनल, राइट? दैट you can never trust them to score. See, Man City or Everton का match था, you know Everton is playing well. So, मतलब dropping points against Everton is not a shame. But we dropping points against Bournemouth and City के साथ we are supposed to be the champions, right? We lost the match against them. You have to be a champion team doesn't lose these matches. They don't draw. Okay, like that's why I always said, right, the लास्ट सीजन अगर आर्सेनल ने स्क्रू अप नहीं किया होता, लास्ट सीजन में भी अगर आर्सेनल ने स्क्रू अप नहीं किया होता, लास्ट सीजन तो छोड़ दो, वो लास्ट सीजन आर्सेनल वुड हैव, दैट टीम वाज प्लेइंग मच बेटर फुटबॉल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, right? This time this was asked to take, other teams did not perform, and we are making City come to us and say that boss मेरे को तू चिमटी दे तो ही मैं काम करूंगा, basically that is the logic. That is what I kind of understood how Arsenal after seeing this strategy of getting Zubimendi in place of this, I totally lost it. I don't think any normal manager could do that. मतलब मेरे को मुझे भी बिठा दिया होता ना, मेरे को अगर कुछ, मैं खुद इतना प्रेशर में भी होता ना, पर मैं इतना बड़ी गलती नहीं करता, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे को फुटबॉल नॉलेज जीरो है, बट ऐसा हरकत जो मतलब जुबिमेंडी को लेकर आए, जो बंदा वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म है, उसको तुम लेकर आए वाइट के, जब तुम्हारा मस्केरा पड़ा हुआ है। मतलब दो स्मॉल थिंग्स ऑलवेज मेक्स मी बिलीव दैट व्हाट द फक इज हैपनिंग एट आर्सेनल। आज बच गए, I mean, आई होप और 2 मैचेस बच जाए और हम जीत जाए और सिटी के से ट्रॉफी छीन ले, बस मेरा वही होप है। बहुत जीत लिया सिटी ने, अभी आर्सेनल की है, और मेरे, एज यू सेड, आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू लास्ट अनदर सीजन। दिस सीजन has to be Arsenal. They have to win their Premier League. They have to win the Champions League. There's too much of ये तो emotional गया, investment has gone on.